Welcome to Education Point. इंजीनियरिंग ड्राइंग रो पार्ट 2 वीडियो रे आपण मानक स्वागत. प्रीवियस वीडियो रे आमे इंजीनियरिंग ड्राइंग रो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ फॉर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर पई फास्ट वीडियो अपलोड करथिले. आपण मानकर भल रेस्पॉन्स आसथिला. आशा करूची पार्ट 2 मध्य से सेम भल पाइबा मिलिबो. सो ये पार्ट 2 रिगार्डिंग लाइन्स लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग. सो ये आमे डीपली एक्सप्लेन करिबा रिगार्डिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग जोटा कि ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ रिसेंटली रिक्रुटमेंट बाहर थिबा असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर रे क्वेश्चन सिलेबस वाइज आम डिस्कशन करिबा. सो चलंतु आज पार्ट 2 वीडियो को वेलकम करिबा. ए पार्ट 2 रिगार्डिंग रहिबो लाइन्स लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग. सो मु डिटेल रे पार्ट करिकी सब वीडियो अपलोड करिबी. पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल. डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक दे देबी. जो माने देखि नांती से माने जाके देखि देबे. ये हूँ पार्ट 2 रे लाइन्स लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग विषय रे आमे डिस्कशन करिबा. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु. मीडियम थिकनेस लाइन ग्रुप ऑफ 2 mm आर नॉट यूज्ड फॉर. सो आमे डिफरेंट टाइप रो लाइन थाए इंजीनियरिंग ड्राइंग रे. थिक लाइन, थिन लाइन, कंटीन्यूअस लाइन, डैश लाइन. सो दीज आर द डिफरेंट लाइन्स इन इंजीनियरिंग ड्राइंग. सो ये देइछि जे मीडियम थिकनेस line group of 2 mm are not used. So options are outlines, dotted lines, cutting plane lines na dimension lines. So मन रखंतु मीडियम थिक लाइन्स टा डायमेंशन लाइन रे यूज हुए नहीं, कारण डायमेंशन लाइन पाई थिन लाइन यूज हुए. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Initial work and construction lines are drawn using dash pencil. So options are 3H, 4H, only H, 2H. So initial work और construction पाई generally हमें H pencil use करांती. So आपण माने मने रखंतु initial work और construction lines पाई H pencil हमें use करूँ. Next question. Center lines, सेक्शन लाइन आर ड्रॉन यूजिंग. आमे जेकोसी इंजीनियरिंग ड्राइंग रे सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन पाई को पेंसिल यूज करिबा. H, 2H, 3H और 4H, SB. सो ये आमे 3H और 4H पेंसिल यूज करिबा. सो पेंसिल रो आमे जनरली मन रखंतु पेंसिल रो ग्रेडेशन टा आमे जनरली थाए तार हार्डनेस को नहीं की. सो पेंसिल रो कैटेगरी वाइज हार्डनेस को नहीं कि आमे पेंसिल को डिवाइड माने कैटेगराइज्ड करा जाए. से भितर H, 2H, 3H, 4H बा SB ये सब हैला गुटोटे ग्रेड. सो किंतु एटी जो क्वेश्चन अच्छी सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन आमे ड्रॉ करिबा केवल 3H और 4H पेंसिल रे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लाइन गिवन बिलो इज यूज्ड फॉर. सो ये गोटे लाइन देखिए देखु एमती जिगजैग लाइन टाइप अच्छी देखिपे. लॉन्ग लाइन देन जिगजैग, लॉन्ग लाइन जिगजैग. से पचारि कि यही लाइन टा जनरली आमे कोठी यूज करा जाए. ऑप्शन अच्छी लॉन्ग ब्रेक लाइन, कटिंग प्लेन्स, सेंट्रोडियल लाइन्स ना आउटलाइन्स ऑफ एडजेसेंट पार्ट. सो मन रखंतु जदि लाइन विथ जिगजैग थाए कंटिन्यूअस रे ताहले आमे लॉन्ग ब्रेक लाइन को डिनोट करिया पाई दिस टाइप ऑफ लाइन इज यूज्ड. लॉन्ग ब्रेक लाइन पाई आपण माने माइंड रखि नियंतु जे डैश माने फुल लाइन देन जिगजैग, फुल लाइन जिगजैग, फुल लाइन जिगजैग. तो दिस इज यूज्ड फॉर लॉन्ग ब्रेक लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The line given below is used. So here another question. Here thick, then again thin,
थिक थिन एमती कंटिन्यूअस रे चलिबो ताले एई टाइप रो जदि आपण मार्क करथिबे गुटे मोटा रे गारो थिबो तापर गुटे पतला देन मोटा पतला एमती डायमेंशनिंग जे भलसे करिथिबो से भलसे जानि पारथिबो सो बेसिकली एई टाइप रो लाइन आपण मानकर ऑप्शन कोन अछि देखंतु हिडन आउटलाइंस कटिंग प्लेन्स हिडन एड्स डायमेंशन लाइन्स सो जदि माने थिक देन डैश थिक थिन डैश थिक डैश एमती जदि रहइबो ताहले कटिंग प्लेन्स रे यूज हुई नेक्स्ट क्वेश्चन the line given below is used so this question again repeated so hidden edge रे हमें यूज हुए नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राइंग पेंसिल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन रिलेटिव सो ये आम आगुरी भी डिस्कसन करते ड्राइंग पेंसिल कहार माने कहा को नहीं कि आम तार रिलेटिव कौन इंक्रीज परसेंटेज को नहीं कि आम ग्रेडेड करा जाए तो आम कही हार्डनेस को नहीं कि पेंसिल आम डिफरेंट ग्रेड रो कैटेगराइज करा जाए सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन so here is a table from the left side some data are given here the right side also some data given you have to match the table 1 to table 2 so here number 1 dimensions line number 2 extension or projection line number 3 margin line and number 4 outlines on the right side you can see continuous thick line continuous thin line continuous thick line and continuous thin line so if you see from the first question dimension line is denoted by continuous thin line so dimension line अपन माने जिते ड्राइंग करथिबे डायमेंशन लाइन को पूरा पतला रे आपण मार्किंग करथिबे so one will be second eye second extension or projection line extension or projection means some part will be projected or some part will be hidden by somewhere so that person you have to make it continuous thin line so 2 will be matched to IV so next margin line normally we do margin line with continuous thick line and outline also will do by continuous thick line so from the above question the correct option will be option C so you can also again rematch it dimension line is connected with continuous thin line extension or projection line will be this one continuous thick lines continuous thin line margin line will be continuous thick outline will be continuous thick so first two will be the continuous thin line and last two will be continuous thick line so the correct option for this question is option C next question in engineering drawing which type of line indicate that there is a change of plane so engineering drawing रे केउ प्रकार रो लाइन टा इंडिकेट करे जे गुटे प्लेन रो आ गुटे प्लेन चेंज होउछ सो एठी हमें ऑप्शन अछि देखंतु continuous thin wavy long chain thin continuous thick medium thick short dashes so out of 4 option C that is continuous thick line will be indicate for change of plane पाई आमे continuous thick line यूज करा जाए so माइंड रे फिक्स करी रखी नियंतु जे continuous thick line को आमे माने change of plane पाई continuous thick line द्वारा आमे इंडिकेट करू नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following lines are used to show that the object is caught and then viewed
सो एमानक मध्यरु को लाइन्सटा आमे मार्क करिवा जे ऑब्जेक्टटा को कट कराइछि आउ देन देखाउछि सो एठी आमे ऑप्शन देखिबा हिडन लाइन्स लीडर लाइन्स सेंटर लाइन्स hatching lines so from the above four option D that is hatching lines so कोनोसी ऑब्जेक्ट को जदि आपण काटिकी सेक्शनल व्यू रे देखुचंती काटिकी देन हैचिंग लाइन आपण देबे नेक्स्ट क्वेश्चन what do hidden lines in orthographic projection denote so hidden line को आमे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रे कौन परी आमे डिनोट करांती होल्स और स्लॉट चेंज ऑफ प्लेन पोजीशन ऑफ कट ना सेंटर ऑफ सर्कल और सिलिंडर सो एटा गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन समस्ते माने नोट करी रखंतु जे जदि कौनसी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रे हिडन लाइन को आमे कौन भाव रे डिनोट करंती सो आंसर विल बी ए hole or slot. Next question, from the below figure what is the name of the line X? Here a figure is given and we can see two dotted line is given and there is a letter X marked on it, so you have to find out what is the name of that line. So as we see, when any dotted line given on a plane, then that should be what? That should be, just a minute, options are outline, section line, hidden line, hatching line. So that is hidden line. That means that two persons is hidden. We cannot see directly by the drawing. So that person, hence that person is indicated by dotted line. So the correct option for this question is option C. Next question, what is the type of line used for line A? So here is a figure given and the dimension of that figure is given x mm. So here A is given, so options are continuous thick, continuous thin straight, medium thick short dashes, continuous thin wavy. So आमे जानिचे जे कोनोसी ऑब्जेक्ट रे जदि डायमेंशन को आमे डिनोट करिबा ताले गोटे पूरा पतला लाइन थाए, सो ताको आमे आंसर कोन कहबा. So here the answer will be B, continuous thin line. जे कोनोसी ऑब्जेक्ट को आपण डायमेंशन करंतु से डायमेंशन रो लाइन टा पूरा थिन हबो, continuous thin. So answer will be B. Next question, in unidirectional system the dimensions are. Unidirectional system रे डायमेंशन को आमे केमिति भाबरे डिनोट करंती. ऑप्शंस आर placed above the dimension line, placed below the dimension line, placed by the breaking the dimension line in the middle, placed left side of the dimension line. So there are four options given. You have to choose the correct option, and if you see the question here, unidirectional system is given. So in unidirectional system it is placed by breaking the dimension line in the middle. So option C will be the correct. Next question, in aligning system the dimension are, options are placed parallel to the dimension line, placed perpendicular to the dimension line, placed left side of the dimension line, placed right side of the dimension line. So aligning system रे amaro placed perpendicular to the dimension line. So the correct option for this question is B. Next question, from unidirectional system
Now again the questions come from unidirectional system. From unidirectional system it is dash. Options are convenient to read dimension from the bottom edge, convenient to read dimensions from the right hand edge, convenient to read dimension from the right hand edge, convenient to read dimension from the top. So the correct answer for this question is option A, that is convenient to read dimension from the bottom edge. Next question, in which system of dimensioning the figures can read from the bottom as well as right hand side of the drawing? So क्यों डायमेंशनिंग रे फिगर को आमे बॉटम as well as राइट हैंड साइड रे ड्रॉ करा जाए. वेरी वेरी इंपोर्टेंट. सो डिफरेंट टाइप रो सिस्टम अच्छे हमर अलाइंग सिस्टम, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, नॉन अलाइंग मल्टी डायरेक्शनल सिस्टम, पैरेलल सिस्टम. सो ओनली अलाइंग सिस्टम रे आमे बॉटम as well as right hand side रे ड्रॉ करा जाए. So option A will be the correct answer. Next question, which of the following dimension is according to the aligning system of dimensioning? So options are so here is a question, figure is given. So this figure belongs to aligning system. You have to find out the dimensioning. So here as we know, in aligning system we take bottom as well as right hand side. So here the bottom and right hand side, the value is what? So here the value is 40. So the answer will be A, that is 40. Next question, in dimensioning the lines including the dimension line are known as, options are leader line, dimension line, extension line, outline. So the correct answer for this question is option C, extension line. Next question, while dimensioning a circle, the leader line and the dimension line are drawn at which angle with respect to each other? जेतेबेले आमे गोटे सर्कल को डायमेंशनिंग करा जाए, लीडर लाइन आउ डायमेंशन लाइन केते एंगल रे परस्पर ड्रॉन करा जाए. सो ऑप्शंस अच्छी 45, 30, 0 or 180 degree or 90 degree. So the correct option for this question is option C, that is 0 or 180 degree. Next question, while dimensioning holes, slots, etc., how would their number be specified? होल्स हो कि स्लॉट हो जत्ते बेले आमे डायमेंशनिंग करंती से माने केमिति स्पेसिफाइड होंती देखंतु. ऑप्शन देखंतु, नंबर रिटन ऑन द डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन ऊपर नंबर लिखा जाए ना. नंबर इज रिटन ऑफ द लीडर लाइन, number is written on the corner of page, number of written on the right of the side of the hole or slot. So the correct option for this question is A, that is number written on the dimension line. Next question, what is the height if the dimension figure written on the dimension line? Options are 7 mm to 9 mm, 2 mm to 3 mm, 6 mm to 8 mm, 3 mm to 5 mm. So the correct answer for this question is D, that is 3 mm to 5 mm. While dimensioning, what would always be written before a point accompanied by a figure if the value of the figure is less than unity? So take this question very important, because if you see the syllabus of ATO, then letters, numbers, lines and dimensioning, some of few questions might be asked in the exam. So for my point of view, this would be the very important questions for the upcoming exam. So options are 1, 0, 2, 6. So the correct answer for this question is 0. Next question, in which system of the dimensioning the figure can read from the bottom only? So क्यों डायमेंशनिंग सिस्टम रे फिगर को आमे बॉटम रु रीड करू? ऑप्शन देखंतु,
aligned system, unidirectional system, non-aligned multidirectional system ना parallel system. So unidirectional system रे आमे bottom रू पढ़ू, whereas aligned system रे top रू आउ right side रू पढ़ू. Next question. The ratio of height to length of an arrow in the dimensioning is 1:2, 1:3, 1:4, 1:1.5. So out of 4 options, the correct option will be the B, that is 1:3. The ratio of height to length an arrow in dimensioning. आमे जिते बले dimensioning करो एरो आमे तीर गोटे लगाऊ एंड रे. सो से एरो रो डायमेंशन होची 1:3 रेशियो. सो मन रखंतु. नेक्स्ट क्वेश्चन. डायमेंशनिंग डज नॉट रिप्रेजेंट. सो एमान को मध्यरु डायमेंशन जो आमे दिया जाए कौन रिप्रेजेंट करेनी? हाइट, लेंथ, डेप्थ, मटेरियल. सो हाइट, लेंथ, डेप्थ ये रिप्रेजेंट करे किंतु मटेरियल रिप्रेजेंट करेनी. सो करेक्ट ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is the wrong statement regarding dimensions? Options are every dimension must be given but none should be given more than once. Every dimension should be written to the left side of the drawing. Dimension should be placed outside the views. A center line should not be used as a dimension line. So the correct option for this question is every dimension should be written to the left side of the drawing. So जिते भी आपनकर ड्राइंग रहिबो सबुले डायमेंशनिंगटा राइट साइड रहे, ये लेफ्ट साइड देजी. तेणु ये स्टेटमेंटटा रॉन्ग डायमेंशन ऊपर. एवरी डायमेंशन शुड बी रिटन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ड्राइंग. ये स्टेटमेंटटा भूल अछि. बुझला. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. Dimensions lines should be drawn at least dash mm away from the outline from and each other. So dimension line normally drawn करा जाए केते mm छाड़ी की 5, 6, 7, 8. So 8 mm छाड़ी की हमें dimension line को drawn करा जाए. Next question. The wrongly represented line in the given figure. एठी गुटे figure अछि मार्क करंतु. एठी अछि outline, एला center line, ये एक्सटेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन. सो सबू लाइन गुड़ा दे देछि मन रखंतु. सो एठी कहला कोटा रिप्रेजेंट करूछि रॉन्गली. सो देखंतु चारटा भितरु आउटलाइन देखंतु. ए आउटलाइनटा भूल. से आउटलाइनटा भूल. एटा एक्चुअली हबो हिडन लाइन. सो हिडन लाइन को से आउटलाइन दे देछि से. तेणु ऑप्शन सी टा हला माने ए क्वेश्चन पई करेक्ट. Option C will be the correct outline. Next question. Location and datum dimension indicates length, diameter, height, positions. So location और datum dimension को हमें diameter द्वारा indicate करा जाए. So option B will be the correct. Next question. And ये question होची ये वीडियो रो शेषो वीडियो. Size or functional dimension does not indicate thickness, radius, depth, positions. So size or functional dimension position को indicate करेनी. So option D will be the correct. So ये वीडियो रे थिला इंजीनियरिंग ड्राइंग रो पार्ट 2 जोटा कि टॉपिक हमरो थिला लेटर. टॉपिक हमरो थिला लाइन्स, लेटरिंग, डायमेंशनिंग. प्रथम वीडियो रे आमी अपलोड करथिले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग टूल्स एंड देयर यूजेस. जो माने प्रथम वीडियोटी को देखि नांती मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी. सेठी जाई कि आपण माने डायरेक्ट देखि परिबे. जदि वीडियो आपन को पसंद लागे ताले लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे एवं शेयर करिवे. सो आगामी पार्ट 3 वीडियो पाई आपण माने प्रस्तुत थांतु. निश्चिंत भाव अपलोड हबो. धन्यवाद.